গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিজেপিৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল সেলিব্ৰিটি প্ৰাক্তন আইপিএছ আনন্দ মিশ্ৰ আৰু তাৰ পিছতে আনন্দ মিশ্ৰই এতিয়া বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী যুঁজত নমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কালিৰ দিনটোত প্ৰাক্তন আইপিএছ আনন্দ মিশ্ৰই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে তেখেত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব। বক্সাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা যিকোনো পৰ্যায়ৰ পৰা তেখেত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব, অৰ্থাৎ নিৰ্বাচন খেলিব। বক্সাৰ আত্মসন্মানৰ কথা আছে, অৰ্থাৎ মোৰ নিজৰ আত্মসন্মানৰ কথা আছে। মই ৰাজনৈতিক পথটো বা ৰাজনৈতিক খেলপথাৰখন মই বাছি লৈছোঁ, গতিকে মই নিৰ্বাচন খেলিমেই বুলি এক প্ৰকাৰে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই। অৰ্থাৎ এতিয়া বিজেপিৰ পৰা টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আনন্দ মিশ্ৰই কোন দলৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বা নিৰ্দলীয় হৈয়ে খেলিব নেকি, কি কৈছিল আনন্দ মিশ্ৰই, আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। জনাইছোঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলিব আনন্দ মিশ্ৰই। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিছে প্ৰাক্তন আইপিএছ আনন্দ মিশ্ৰই। নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হ'ব নিৰ্বাচনত আনন্দ মিশ্ৰ। বিজেপিৰ পৰা টিকট বঞ্চিতৰ পাছতেই প্ৰথমবাৰলৈ এই ঘোষণা, ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এই সিদ্ধান্ত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই। আৰু ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান। আৰু বক্সাৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে প্ৰাক্তন আইপিএছ গৰাকীয়ে। মই অন্তঃকৰণেৰে কৈছোঁ, মই নিৰ্বাচন খেলিম আৰু টিকটৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লে বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হ'ব। আৰু এয়া বক্সাৰ জনতাৰ আত্মসন্মানৰ কথা আৰু বক্সাৰ জনতাৰ সপোন মই ভাঙিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম, খেলিম। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলিব এতিয়া আনন্দ মিশ্ৰই, অৰ্থাৎ নিৰ্দলীয় হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিছে প্ৰাক্তন আইপিএছ আনন্দ মিশ্ৰই। নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হ'ব এতিয়া আনন্দ মিশ্ৰ। বিজেপিৰ পৰা টিকটৰ বঞ্চিত হোৱাৰ পাছতেই প্ৰথমবাৰলৈ এই ঘোষণা কৰিছে, ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এই সিদ্ধান্ত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই। আৰু ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান। জনাইছোঁ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে বক্সাৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে প্ৰাক্তন আইপিএছ গৰাকীয়ে। আৰু মই অন্তঃকৰণেৰে কৈছোঁ যে মই নিৰ্বাচন খেলিম, মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম, টিকটৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লে বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হ'ব। আৰু এয়া বক্সাৰ জনতাৰ আত্মসন্মানৰ কথা। এইগৰাকী চেলিব্ৰিটি আইপিএছ আনন্দ মিশ্ৰ, যিগৰাকী অসমৰ এগৰাকী চেলিব্ৰিটি আইপিএছ আছিল, আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল। তেখেতে প্ৰশাসনিক উচ্চ পদ ত্যাগ কৰি ৰাজনৈতিক পথাৰত খোজ দিবৰ বাবে গুচি গৈছিল, অসম ত্যাগ কৰি বিহাৰলৈ গুচি গৈছিল। আৰু বিহাৰত গৈ তেখেতে বিহাৰৰ এই বক্সাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব এই ঘোষণা কৰিছিল। আৰু এই যি ঘোষণা বিজেপি আলোচনা চলি আহিছিল, সকলোৰে মাজতে চিন্তা আশা প্ৰত্যাশা জাগিছিল যে বিজেপিয়ে এবাৰ টিকট প্ৰদান কৰিব আনন্দ মিশ্ৰ। কিন্তু পঞ্চমখন তালিকাতো আনন্দ মিশ্ৰৰ নাম নাছিল, অৰ্থাৎ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত নাম নাছিল আনন্দ মিশ্ৰৰ। আনন্দ মিশ্ৰৰ নাম নহাৰ পাছতেই সমৰ্থকসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল। আনন্দ মিশ্ৰৰ যিকেইগৰাকী অনুৰাগী আছিল, যিসকল সমৰ্থনকাৰী আছিল, তেখেতসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল যে এয়া প্ৰতাৰণা কৰিলে, আনন্দ মিশ্ৰক লৈ ধোকা দিলে, অৰ্থাৎ প্ৰতাৰিত কৰা হ'ল ইত্যাদি অভিযোগ উত্থাপন কৰি এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল। আৰু তাৰ পিছতেই এইগৰাকী চেলিব্ৰিটি প্ৰাক্তন আইপিএছ আনন্দ মিশ্ৰই নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে মই নিজেই এই ৰাজনৈতিক পথাৰত খোজ দিবৰ বাবে বাছি লৈছোঁ, গতিকে মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'মেই হ'ম। আৰু তাৰ বাবে কোনোবাই দলে মোক সহায় কৰিলেও কৰিব, নকৰিলেও নাই, মই নিৰ্দলীয় হ'লেও খেলিম বুলি উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কালিৰ দিনটোত। আমি এই মুহূৰ্তত আইপিএছ আনন্দ মিশ্ৰই, প্ৰাক্তন আইপিএছ আনন্দ মিশ্ৰই কি কৈছিল, সামাজিক মাধ্যম যোগে তেখেতৰ যি ভাষ্য আছিল, সেই ভাষ্য আমি এই মুহূৰ্তত শুনাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। आपको बताऊं, देखिए, दिस इज अ डिक्लेरेशन विच आई एम मेकिंग। मैं सबको ये बता रहा हूं कि मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है। मैं सोशल सर्विस में आया हूं, मैं पॉलिटिकल रास्ते से काम करना चाहता हूं। मैं यहां पे मन बना लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो आप सब जान लीजिए कि यस, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब ये चाहे जिस माध्यम से हो, बट मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये मेरी अंतःकरण की आवाज है, और क्यों लड़ूंगा ये भी आप जान लीजिए। मैं बहुत सालों से यहां पे अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ, थोड़े बहुत करके कुछ ना कुछ मैं एक्टिव रहा हूं। लास्ट कुछ महीनों में मैं काफी ज्यादा जुड़ा हूं लोगों से, अपनी बात को व्यक्त किया है, अपने लोगों की बात सुनी है, उनको समझने की कोशिश की और अपनी बात समझाने की कोशिश की। इसमें हम समाज में, यानी जनता में और मुझ में एक रिलेशन बिल्डअप हुआ, जिसमें कि काफी सारे भावनाओं का आदान प्रदान हुआ, आशाएं डेवलप हुई, कुछ उम्मीदें जागी, कुछ कमिटमेंट्स बने। और अगर सडनली
हम इसी पे काम कर रहे थे कि शायद मेरे विचारधारा के हिसाब से एक पर्टिकुलर पार्टी से मुझे टिकट मिलता और मैं लोगों का सेवा करता और एक बड़े विजन जो देश पे चल रहा है उस विजन को और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने की काबिलियत लेके आया था और यहाँ पे मैं स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करता पब्लिक इंटरेस्ट में। वो रास्ता नहीं हुआ, लेकिन वो कमिटमेंट तो है। वो लोगों के साथ जो एक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो भाव जुड़ा है, उसको मैं कैसे छोड़ूं, उसको मैं कैसे दागा देता हूं, उसको मैं कैसे कह दूं कि यार जो बात हुई थी बस बात हुई थी, टिकट पर डिपेंडेंट था मेरा आपके लिए सर्विस ओरिएंटेशन। ये तो गद्दारी होगी ना मुझसे। मैं कैसे, फिर मेरा गांव है, मेरा घर है, मुझे आना है, मुझे लोगों से, इन्हीं लोगों से मिलना है, इनके बीच ही रहना है, कैसे कर सकता मैं गद्दारी। इसीलिए हमारे सारे लोगों से मैं मिला, मैं जहां जहां गया सब लोगों ने मुझे यही कहा कि भैया अब ये जो बात है ये बक्सर के सम्मान की बात है, या मेरे पर्सनल सम्मान की भी बात है, मेरा पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। मैं इसलिए मैंने थोड़ा वक्त लिया कि देखते हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई इसके रिगार्डिंग कोई गाइडेंस नहीं मिला। तो गाइडेंस नहीं मिला तो मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो बैठ नहीं सकता हूँ। लोग मुझसे रोज पूछ रहे हैं मतलब कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप हमें धोखा देने वाले हो क्या, आपसे बातें हुई थी, हमने कुछ सपने देखे थे अपने इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेके, हमने कुछ प्लान्स बनाए थे, उसका हुआ क्या भैया, आप क्या कर रहे हैं, सारा का सारा यूथ, हाउ कैन आई डिच देम। तब मैंने फाइनली हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा, ये इलेक्शन बक्सर की जनता लड़ेगी। मैं सिर्फ एक उनके लिए चेहरा हूं, एक नाम हूं, एक बड़े से जो दुकान में जैसे बोर्ड बाहर लगता है तो बोर्ड है, यहां बक्सर का हर एक बंदा एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है आनंद मिश्रा के नाम से। तो इस बात से मैं अपील भी करूंगा कि यह बक्सर के सम्मान की लड़ाई है। मैंने जो प्रण किया था, मैंने जो आपसे घूम घूम के जब मिला, जब मैं जो भाव व्यक्त किया था, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई एम श्योर कि हमारी बक्सर की जनता भी उससे पीछे नहीं हटेगी। मैं आपको बताऊं, देखिए दिस इज अ डिक्लेरेशन विच आई एम मेकिंग। मैं सबको ये बता रहा हूं कि मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है, मैं सोशल सर्विस में आया हूं, मैं पॉलिटिकल रास्ते से काम करना चाहता हूं। मैं यहां पे मन बना लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो आप सब जान लीजिए कि यस, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब ये चाहे जिस माध्यम से हो, बट मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये मेरी अंतःकरण की आवाज है। और क्यों लड़ूंगा ये भी আইপিএছ প্ৰাক্তন আইপিএছ আনন্দ মিশ্ৰৰ অৰ্থাৎ তেখেতে গৌৰৱেৰে কৈছে যে মই বক্সাৰ সমষ্টিবাসীৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম, মই ৰাজনৈতিক পথটো বা ৰাজনৈতিক খেলপথাৰখন বাছি লৈছোঁ, গতিকে মই এই ৰাজনৈতিক খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ হ'ম, অৰ্থাৎ নিৰ্বাচন খেলিম। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া নিৰ্বাচন খেলিব আনন্দ মিশ্ৰই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিছে প্ৰাক্তন আইপিএছ আনন্দ মিশ্ৰই। আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হ'ব মিশ্ৰ। বিজেপিৰ পৰা টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পাছতেই প্ৰথমবাৰলৈ এই ঘোষণা কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই। আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এই সিদ্ধান্ত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান আৰু বক্সাৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা ঘোষণা প্ৰাক্তন আইপিএছ গৰাকীৰ। মই অন্তঃকৰণেৰে কৈছোঁ যে মই নিৰ্বাচন খেলিম। টিকটৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লে বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হ'ব, আৰু এয়া বক্সাৰ জনতাৰ আত্মসন্মানৰ কথা। আৰু বক্সাৰ জনতাৰ সপোন মই ভাঙিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ বুলি এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে এইগৰাকী প্ৰাক্তন আইপিএছ আনন্দ মিশ্ৰই, যিগৰাকী অসমৰ এগৰাকী চেলিব্ৰিটি, অসমৰ লগতে ভাৰতৰ চেলিব্ৰিটি আইপিএছ হিচাপে নিজৰ পৰিচয় আছিল। আৰু অসমৰ কেইবাখনো জিলাত তেখেতে আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল, কাম কৰিছিল। আৰু তাৰ পিছতে ৰাজনৈতিক পথাৰত খোজ দিবৰ বাবেই তেখেতে উচ্চপদস্থ প্ৰশাসনিক দিশৰ উচ্চপদস্থ পদ এৰি ত্যাগ কৰি গুচি গৈছিল, অৰ্থাৎ গৃহ ৰাজ্যলৈ গুচি গৈছিল। আৰু তাৰপিছত তেখেতে গৃহ ৰাজ্যৰ পৰাই নিৰ্বাচন খেলাৰ পণ লৈছিল। আৰু তাৰপিছত বিজেপিৰ পৰা তেখেতে টিকট লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিল, এই চৰ্চা চলিছিল। কিন্তু অৱশেষত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বিজেপিয়ে পঞ্চমখন তালিকাটো নাম অন্তৰ্ভুক্ত নকৰিলে আনন্দ মিশ্ৰৰ। আনন্দ মিশ্ৰ অৰ্থাৎ বিজেপিৰ আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নামহে ঘোষণা কৰা হ'ল। কিন্তু তাৰ পিছতেই আনন্দ মিশ্ৰই এতিয়া নিজাকৈ ঘোষণা কৰিছে, যে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে, তেখেতে কৈছে মই নিৰ্বাচন খেলিমেই। কোনো দলে সহায় কৰিলে কৰিব, নকৰিলেও নাই, মই নিৰ্দলীয় হৈ হ'লেও নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম, ইয়াত নিশ্চিত। অৰ্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ৰাইজৰ হকে, জনতাৰ হকে, বক্সাবাসীৰ বা বক্সাৰ সমষ্টিবাসীৰ হকে বা জনতাৰ হৈ মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম, নিৰ্বাচনৰ এক কণ্ঠ হিচাপে থিয় দিম বুলি উল্লেখ কৰিছে এইগৰাকী চেলিব্ৰিটি প্ৰাক্তন আইপিএছ আনন্দ মিশ্ৰই।
এতিয়া আনন্দ মিশ্ৰ যেহেতু নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব, লোকসভা নিৰ্বাচনত খেলিব, জয়ী হ'ব পাৰিব নে নোৱাৰে সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয়। কিন্তু বিজেপি ইতিমধ্যে এগৰাকী বক্সাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে আৰু আন আন দলেও ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিৰ্দলীয় হিচাপে যদি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় এইগৰাকী IPS আনন্দ মিশ্ৰ এতিয়া জয়ী হ'ব পাৰিব নে নোৱাৰে সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয়। পুনৰবাৰ IPS আনন্দ মিশ্ৰৰ মন্তব্য শুনাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ফুল প্লেট মাধ্যমৰ জৰিয়তে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। জনাইছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিৰ্বাচন খেলিব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে, এতিয়া নিৰ্বাচন খেলিব আনন্দ মিশ্ৰই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে। আৰু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্ৰাক্তন IPS আনন্দ মিশ্ৰৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হ'ব আনন্দ মিশ্ৰ। বিজেপিৰ পৰা টিকট বঞ্চিত পিছতেই প্ৰথমবাৰলৈ এই ঘোষণা আৰু ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত এই সিদ্ধান্ত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই। ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান। বক্সাৰ বিভিন্ন স্থানত আৰম্ভ হৈছে প্ৰচাৰ অভিযান। বক্সাৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে প্ৰাক্তন IPS গৰাকীয়ে। মই অন্তঃকৰণেৰে কৈছোঁ, মই নিৰ্বাচন খেলিম। টিকটৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লে বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হ'ব আৰু এয়া বক্সাৰ জনতাৰ আত্মসন্মানৰ কথা। আৰু বক্সাৰ জনতাৰ সপোন মই ভাঙিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰাক্তন IPS গৰাকীয়ে। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলিব এনেদৰে আনন্দ মিশ্ৰই ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে, অৰ্থাৎ নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে প্ৰাক্তন IPS আনন্দ মিশ্ৰই। পুনৰবাৰ আনন্দ মিশ্ৰৰ সেই বিশেষ ভাষ্যটো আমি শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। बिल्कुल सर, आपके अलावा किसी को चारा नहीं चलेगा। मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है। सोशल सर्विस में आया हूँ, मैं पॉलिटिकल रास्ते से काम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे मन बना लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो आप सब जान लीजिए कि यस, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब ये चाहे जिस माध्यम से हो, बट मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इस बात को आप अच्छे से समझें। ये मेरी अंतःकरण की आवाज है, और क्यों लड़ूंगा ये भी आप जानते हैं। मैं बहुत सालों से यहाँ पे अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ थोड़े बहुत करके कुछ न कुछ मैं एक्टिव रहता हूँ। लास्ट कुछ महीनों में मैं काफी ज्यादा जुड़ा हूँ लोगों से, अपनी बात को व्यक्त किया है, अपने लोगों की बात सुनी है, उनको समझने की कोशिश की और अपनी बात समझने की कोशिश की। इसमें हम दोनों समाज में यानी जनता में और मुझमें रिलेशन डेवलप हुआ, जिसमें कि काफी सारे भावनाओं का आदान प्रदान हुआ, आशाएं डेवलप हुई, कुछ उम्मीदें जाए, कुछ कमिटमेंट्स बने। और अगर सडनली हम इसी पे काम कर रहे थे कि शायद मेरे विचारधारा के हिसाब से पर्टिकुलर पार्टी से मुझे टिकट मिलता और मैं लोगों का सेवा करता और एक बड़े विजन जो देश पे चल रहा है उस विजन को और स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करने की काबिलियत लेके आया था। और यहाँ पे मैं स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करता पब्लिक वो रास्ता नहीं है, लेकिन वो कमिटमेंट तो है। लोगों के साथ जो एक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो भाव जुड़ा है, उसको मैं कैसे उसको मैं कैसे उसको मैं कैसे कह दूं कि यार जो बात हुई थी बस बात हुई थी, टिकट पर डिपेंडेंट था मेरा आपके लिए सर्विस ओरिएंटेशन। ये तो गद्दारी है। मैं कैसे, फिर मेरा गांव है, मेरा घर है, मुझे आना है, मुझे इन्हीं लोगों से मिलना है, इनके बीच ही रहना है, कैसे कर सकता हूँ। इसीलिए हमारे सारे लोगों से मिला, जहाँ जहाँ गया सब लोगों ने मुझे यही कहा कि भैया अब ये जो बात है ये बक्सर के सम्मान की बात है, या मेरे पर्सनल सम्मान की बात है, मेरा पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। इसलिए मैंने थोड़ा वक्त लिया कि देखते हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे करना है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई इसके रिलेटेड कोई गाइडेंस नहीं मिला। तो गाइडेंस नहीं मिला तो मैं ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकता हूँ। लोग मुझसे रोज पूछ रहे हैं, मतलब कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप हमें धोखा देने वाले हो क्या? आप आपसे बातें हुई थी, हमने कुछ सपने देखे थे इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर, हमने कुछ प्लान्स बनाए थे, उसका हुआ क्या बना? आप क्या कर रहे, सारा का सारा भूत हो के नहीं पीछे करना। तो मैंने फाइनली हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा, ये इलेक्शन बक्सर की जनता लड़ेगी। मैं सिर्फ एक उनके लिए चेहरा हूँ, एक नाम हूँ, एक बड़े से जो दुकान नहीं चलेगा। तिवारी मुर्दाबाद।
which I am making. मैं सबको ये बता रहा हूँ कि मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है। सोशल सर्विस में आया हूँ, मैं पॉलिटिकल रास्ते से काम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे मन बना लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो आप सब जान लीजिए कि यस, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब ये चाहे जिस माध्यम से हो, बट मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये मेरी अंतःकरण की आवाज है, और क्यों लड़ूंगा ये भी आप जान लीजिए। मैं बहुत सालों से यहाँ पे अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ, थोड़े बहुत करके कुछ ना कुछ मैं एक्टिव रहा हूँ। लास्ट कुछ महीनों में मैं काफी ज्यादा जुड़ा हूं लोगों से, अपनी बात को व्यक्त किया है, अपने लोगों की बात सुनी है, उनको समझने की कोशिश की और अपनी बात समझाने की कोशिश की। इसमें हम दोनों